necessary resilience and courage to face the slings and arrows for the last, I don't know, few decades. Let me use a prime example because one of my challenges as a practicing oncologist who sees 30 to 40 cancer patients every week, and I've been doing this for 35 years. One of my big challenges is to give patients harrowing, unwelcome news without deceiving or withholding the truth. How do you convey the bad news? The key is not just what you say, but in how you say it, of course. You have to do it with empathy, humanity, care, concern, and Emily Dickinson provides a guide about how to go through this. Tell all the truth. You see, the admonition in the first line is you have to tell the truth. You can't lie, you can't hold things back. Tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies. Too bright for our infirm delight, the truth's superb surprise. Like lightning to the children, eased with explanations kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. This is what I'm talking about, the irritability of grief that comes here. The anger that he's expressing. तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सतद के करते मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई अरे बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और नादां है जो कहते हैं कि क्यों जीते हैं गालिब किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और ब्यूटीफुल लाइन जुरत ना हो दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती अरे खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती समझिए हुमा मिर्ज़ा की वालिद खलीलुर रहमान आज़मी एंड हुमा एज यू माइट नो रेख्ता के जो बानी हैं संजीव उनकी बेगम है अब सो I have the highest, deepest respect for this couple, what they are doing for Urdu. उनके जैसा तो कोई नहीं कर सकता होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क या शर्त है कि अपने लहू से वुज़ू करो So for the last भी और smiles भी आपने हमें दी हंसाया भी What a powerful talk और आपने जब कहा कि मैंने अपने टाइम थोड़ा ऊपर कर लिया तो मैं सोचा था कि अभी तो शुरू किया था the hall and I thought I'd welcome President Saab and First Lady when both are here. So thank you so much. Thank you so much. But I just wanted to say something else. Arif Alvi Saab and Begum Alvi Sahiba are no strangers to Napa. They've been patronizing us, they've been supporting us, they know exactly what Napa has been doing. Plays भी देखते रहे माजी में और आते रहे यहाँ पे so in spite of all the security paraphernalia and everything that comes with the position they are a familiar face to Napa and we are so honored कि आप यहाँ आप लोग आए हैं दोनों आज the fact that you've been dealing with terminally ill cancer patients day in and day out seeing death every single day how are you still so compassionate and so humane about it? And the fact कि कहते हैं आपने पहले भी कई मरतबा अपनी talks में ये बात कही कि doctors should not emotionally attach with their patients. How do you still maintain that compassion? क्या ये जो आपकी poetic sense? Thanks to all of you for your patience. Nobody needs to prompt me to recite poetry because I've always done it too much. I think it's the most beautiful thing. Somebody would ask me if I was to choose one beautiful thing in this world, I would say the puzzle immediately because it's
so much. It's the encouragement the nation needs. Because when we see our leaders, we want to emulate you in many ways, but I would say that this is the most powerful way, that you can see such an endorsement of our tehzeeb, our culture, which rests upon this most significant genre that we have developed to the stars, in my opinion. Something that struck me in that, Queen Elizabeth II was about 12 alive, of course. And from that moment on, she was raised to be the queen. And one important thing was she could never show emotion. And so she became trained to be really this deadpan, never show even a single feeling, because that would make you a commoner. The audience. Okay, so I'd like for us to please take the mic to the First Lady if she wants to say anything or ask any question. Good experience आपने जो शेयर किया बहुत शुक्रिया आपका आने का. I'm trying कि कुछ help करूँ, but माशाल्लाह what you are doing is great. Thank you. कि मैं समझता था कि इंसानियत जब खुद चीज़ें देखती है तो उसका दिल नरम होता है. आपकी पोइट्री और सब बहुत देखती हूँ. एंड मैं अभी जो हूँ ना, आपकी जो बेटा वो बच्चा था उसके बारे में जब सुना कि उसको बिल लिखने को कहा उसके डॉक्टर ने, नर्स ने, तो मेरी सिस्टर वहाँ पर मंदिर में भी उसके साथ भी हुआ है लास्ट स्टेज है लंच कैंसर. एंड नर्स ने उसको ला के दिया कि उसको अपने नेक्स्ट टू की और सपोर्ट लिखते. एंड शी सो शाय विद स्ट्रॉन्ग. और मैं और एक बात और कहना चाह रहा हूँ मिसेस अलवी के बारे में. बहुत बहुत अजीम काम कर रही है. एंड वी आर जो पोइट्री है वो उसको और देगी जब मैं इसको बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच. राजीव जी. मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, होती नहीं. बेहद खुशी हुई और आपका जो एक शेर का एहसास है, मैं शोर नहीं कह रही. की पास पानी के करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई. हुआ ये कि when I was 28 years old and I was doing my fellowship, I became a little anxious that I'm not schooling myself properly in Urdu, and I decided that the only way to really understand Urdu poetry is understand Ghalib. Once you can understand Ghalib, you can understand all the istaras and tashbeehs and everything. So I started something called Urdu Mehfil, which meant me, my friend Seema Khan, and my older sister Bibi, to begin with in Buffalo. Once a week we would sit together, open 11 sharas of Ghalib, and started reading the Diwan from the beginning. एक शेर फिर उस पे 11 शरें देखी जाती थी, क्या क्या मतलब है. For the next 20 years, regularly, I read that Diwan cover to cover twice. And वो मेरा रास्ता साईं, सागर से अगर प्यार ना होता, दरिया उल्टा बहता साईं. कागज पर 2-4 लकीरें और न कुछ भी लिखा साईं. हम और तुम एक साथ अकेले, हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं. हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं. मेरी बातें कान तुम्हारे. बड़ी प्रोफाउंड लाइन है. मेरी बातें कान तुम्हारे, बीच में एक सन्नाटा साईं. मैंने
میں نے پہلوں سوچا سائیں کوئی تم سے اچھا سائیں، میں نے پہلوں سوچا سائیں کوئی تم سے اچھا سائیں، تم کو کیا بتلانے سائیں کوئی نہ تم سے اچھا سائیں۔ آتے تھے اب ایسا ہے کہ میں ان کو ستاتا ہوں، جلاتا ہوں، چڑھاتا ہوں، اٹھاتا ہوں، نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں، مہینوں سے کبھی شمع جلاتا ہوں، کبھی آنکھ چڑھاتا ہوں، کبھی منہ کو چھپاتا ہوں، عجب الٹا تماشا ہے، انہیں ہو گئی الفت مجھے نفرت، انہیں نفرت مجھے حیرت، مجھے آتی ہے ہنسی اور انہیں رونا، وہ میرے عشق پہ روتے ہیں میں ہنستا ہوں، وہ وفاؤں کے طلبگار میں اس لفظ سے بیزار، انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش، انہیں اس طرح ستاؤں مجھے جس طرح ستایا، انہیں اس طرح پڑھاؤں مجھے جس طرح پڑھایا، جو کروں آنے کا وعدہ تو مہینوں نہ ہو پورا، جو ہو پورا بھی ہو کیسے ملوں ان کو ستاؤں، قلق کو رنج بڑھاؤں، مجھے کچھ کہنے کو ہوئے تو کہوں رہنے دو، فرصت نہیں سننے کی، اور سنوں بھی تو بس اس کان سے اس کان اڑا دوں، وہ کہیں بہر خدا رحم کرو ہم سے مصیبت نہیں اٹھتی، کرو وہ یاد وہ گھڑیاں جب میرے عشق میں تم رہتے تھے گریاں، یہ ستم کیا ہے کہ محبوب سے رہتے ہو کشیدہ و کبیدہ، نہ محبت کی فکر ہے نہ عنایت کی نظر ہے، جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے، وہی اب سینہ سپر ہے، جو بنا پھرتا تھا قاتل، جو کیا کرتا تھا غمزے، ارے الٹا تماشا ہے کہ پہلے جنہیں تھی الفت انہیں حیرت، مجھے آتی تھی انہیں ہنسی اور انہیں رونا، یہ عجب رنگ محبت ہے کہ پہلے جو ہنستا تھا وہ روتا، اور جو روتا تھا وہ ہنستا۔